is about a celebrity, someone who is a travel enthusiast, but also a wellness and mindfulness enthusiast as well. And what अरे बाउंसर is that she's becoming a host of the platform. As she becomes a host of the platform, she's curated a two-day retreat, two-night, three-day retreat on the platform, where she सारा जी नमस्ते नमस्ते सारा जी बहुत दिनों बाद सारा जी mind, body, and soul all together. Yes, Namaste. I'm Sarani, your host and host, and I look forward to hosting you at this lovely Airbnb wellness retreat in Goa. See you soon. Ooh, thank you so much, Aman. Thank you. And I'm super followed it up with one fantastic performance after the other. But my personal favorite of hers is Ajambi, a movie not as much talked about, but a movie where she put her heart and soul into the role. A heart-wrenching performance that makes you really fall in love with the protagonist. Ladies and gentlemen, I'm super excited to welcome on stage Sara Ali Khan, the incredibly gorgeous and supremely talented actress, and Anu. Please come on stage. Please say a few words. Tell us how do you feel being a host here. Namaste, everybody. Thank you so much for having me. I think that I'm just extremely grateful. I think that apart from my work, which I'm thoroughly grateful for and enjoy and appreciate every day of my life, I think that traveling, exploring, discovering, and wellness is all extremely close to my heart. And I think this Airbnb campaign, this idea of traveling, but also mindfulness and wellness just totally resonates with me. And I'm so glad to be able to do this for you guys and with you guys. So thank you. Ooh, thank you so much, Sarah. I'm going to just ask one question on behalf of everybody. And secondly, I really think that खूबसूरती क्या ही होती है, अंदरूनी ही होती है और वो सिर्फ शांति से मिल सकती है। और शांति कैसे मिलती है, मतलब उसका जवाब किसी के पास ऑनेस्टली आई डोंट थिंक है। बट आई थिंक दैट पार्ट ऑफ दैट जर्नी ऑफ डिस्कवरी इज डेफिनेटली जस्ट यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। और वो कैसे होता है सबके लिए? आई थिंक द आंसर इज डिफरेंट। आई थिंक मेडिटेशन दिमाग को थोड़ा बहुत शांत करता है, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ सीखना, रीडिंग, कुछ पढ़ना, बस अपने आप को एक्टिव रखना, योगा, वर्कआउट, ट्रैकिंग इफ यू आर लकी, यू नो। आई थिंक दैट अपनी निजी ज़िंदगी और अपने प्रोफेशनल करियर में एक तरह का संतुलन लाना और बनाए रखना। आई थिंक बैलेंस इज की, यू नो, वेदर इट्स shooting 24 hours, shooting round the clock, and then taking your time and saying, okay, Kedarnath is open, which is where during season, which unfortunately now we're not, and then taking your time and going there. चलो अभी अच्छे से शूट करेंगे और फिर गोवा की लास्ट, मतलब दिसंबर की लास्ट वीक में गोवा चले जाएंगे। You know, that little bit of balance, I think it keeps you alive, keeps you rejuvenated, keeps you replenished, and keeps you looking forward to, you know, काम के वक्त पे छुट्टी आप सोचते हो कि अरे मज़ा आएगा, then once you're done with your holiday, you're like, I can't wait to go back to work and kill it. So basically balance is key. Swimming pool is very nice in the place that I stayed at. But in this wellness retreat also, I think the swimming pool is lovely, and there's this lovely veranda where you can meditate. Beautiful views of the sun. Sunrise is beautiful, sunset is beautiful. There's always something happening in the sky field that's beautiful. So yeah, those two spots. Thank you. अच्छा मैंने कि लास्ट टाइम जानवी ने चेन्नई में जब अपना घर लोगों को वेलकम किया था, पेट्रन्स के लिए ओपन किया था, क्या ये आपका खुद का बंगलो है? आपका किस तरह का एसोसिएशन है एयरबीएनबी के साथ? नहीं, ये मेरा बंगलो नहीं है। भगवान करे मैं काम करती रहूं और फिर बहुत सारे बंगलोज हो जाए और वो सब एयरबीएनबी पे लगा दूं, बस आप लोगों की दुआएं हैं। बट ये एक वेलनेस रिट्रीट है जो मैं होस्ट कर रही हूँ गोवा में, और बस उम्मीद है कि लोग आएँ और अपने बारे में, अपने खुद के बारे में आकर कुछ सीखें इस
जगह। I can take that. As you already know that Airbnb has. होते हैं बस इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाके साधना करना अलग ही होगा। तो मैं तो खुद अपने आप करती ही हूँ, उम्मीद है आप लोगों के साथ पता नहीं एक दिन 100%. Kamal and I already like modeling, so yeah, for sure. That's a great idea. Thank you. We'll take one Pataudi's more has question. got many palaces, as per my knowledge. So will your palace, Pataudi's got palace. So will your palace be the part of Airbnb's? No, sir. Okay. Any more questions? Of course. I went to Florence with one of my friends, come Stylist Tanya, and our moms. So it was 4 of us, and we had a great time. It was a lovely Airbnb. The host was also really nice and friendly, which is also like one of the advantages, right, of Airbnb. आप जाके host से पूछ सकते हैं, where's the best place to get local coffee, what's a nice local gym around here, और वो आपको थोड़े मतलब what's the correct word, local होंगे, local organic opinions दे सकते हैं, hidden gems बता सकते हैं. Thank you. So yeah, I think that was really nice. You're hosting a retreat yourself. What is one of the practices, no matter where you are in the world, no matter which Airbnb you are in the world, what is that one wellness practice that you would never miss out on? I think meditation and gratitude are things that you should try not to miss out on. And gratitude on the smallest things in life. It can get very easy to want more, to demand more, to complain. Just like I'm grateful for this, like touch wood, like I'm rushing, like I have somewhere to be right now. But right now I'm grateful that whether it's cameras that's my job, or whether it's lovely faces, that's the reason of my job. Like I'm getting that right now, and while I have to rush, I'm grateful for this moment right now. It's important to practice that. Hi, sir. This was not for you and I. Just saying. It wasn't for Ashish there. So that we were Kedarnath, where you shot in Kedarnath, and we keep seeing you going back to Kedarnath and enjoying the place. Do you share a special connect with that place? I share the most special connect with that place. I think that the first time that I went to Kedarnath, I was not an actor. The first time I went to Kedarnath, I don't even know if I was me. And everything I am has come from that place. Everything. So just so much gratitude. और बस बुलावा आता रहे और मैं जाती हूँ. और फिर वापस आती हूँ और काम करती हूँ और बस ये चलता रहे. That's it. fantastic. Thank you so much. Last question for me. Thinking between Kerala and Bali. Both, but one answer happened first. So both definitely. Yeah. That's fantastic. So we have another wellness retreat in the hills. Fingers crossed. We have 2 trips, Bali and Kerala. So बस अब थोड़ा काम मिल जाए. Some movies please quickly because otherwise how are we doing all this? and there are a lot of movies to the pipeline. We can't talk about. So, great. Thank you. Thank you Can I ask for last everybody. question? Yeah. Okay. Can I ask? Super short. So sorry. Hi, my name is Ayush. I'm from Bazooka Media. Hi, Saraji. Hi, Shekhar Paji. Saraji, मेरा सवाल आपसे कि नाम में Airbnb की वापस से शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं आज के दौर पर अभी के डेट में हम अपने आलिशान सपने पूरे करने के लिए बड़े घर बनाने के कहीं ना कहीं वो एयर को गायब कर दे रहे हैं पेड़ को दबाकर. आपको लगता है सर? हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सिटी को, अपने वातावरण को न्यूट्रल भी रखें, पॉपुलेटेड भी रखें. सो लेट्स टेक इट टू जस्ट दैट. I totally agree. Pradushan and pollution are bad. Okay, great. We're going to now break for a quick follow-up. Thank you very much. See you very soon. सारा जी नमस्ते. आ जाइए आ जाइए आराम से. बस थोड़ा पीछे सारा जी बैठ जाइए बैठ जाइए. नहीं बैठ नहीं. थोड़ा इधर हाँ. ऐसे बैठिए. सारा जी लुक यस नाइस लुक. सारा जी लेफ्ट में है, सब लेफ्ट में है. सारा जी इधर नहीं देख रहे हो आप. सारा जी ऑन योर लेफ्ट. थोड़ा ऐसा टर्न हो सारा जी जाए. लेफ्ट में टर्न हो जाइए. सारा जी इधर नहीं देख रहे हो. ठीक था. सारा जी यहाँ पर तो लेफ्ट में हो जाए. सारा जी सारा जी थोड़ा टर्न हो जाइए ना. हाँ ये वन साइड ही आ रहा है. सारा जी लुक. मैम
या परफेक्ट दिस इज परफेक्ट लाइट मैम परफेक्ट पीछे पैब्स भी दिख रहे हाँ दिखने दो सारा जी यहाँ पर नहीं दिख रहे सारा जी यहाँ पर देखो थैंक यू ये वेट वेट कौन थैंक यू बोल रहा है ये इसको भाई है मैडम कौन है थैंक यू बोल रहा है सारा जी नमस्ते कीजिए सारा जी नमस्ते फ्लाइट है सारा जी का फ्लाइट है जल्दी करो सारा जी इधर सामने देखो उधर मत देखो उधर मत देखो सारा जी यहाँ पे देखिए एक बार लेफ्ट में मैम सारा मैं आपके लेफ्ट में सारा जी इधर सारा जी इधर सारा जी यहाँ पर देखा ही नहीं नमस्ते अरे नमस्ते सारा जी नमस्ते ये नमस्ते कीजिए